तो गजल भी पढ़ लूंगा। हाँ हाँ। तो ये एक रुबाई है। जहन्नम हो कि जन्नत, जो भी होगा फैसला होगा। जहन्नम हो कि जन्नत, जो भी होगा फैसला होगा। ये क्या कम है हमारा और उनका सामना होगा। बहुत खूब। ये क्या कम है हमारा और उनका सामना होगा। समझता क्या है तू, समझता क्या है तू, दीवाने जाने इश्क को जाहिद। समझता क्या है तो तू दीवाने जाने इश्क को जाहिद। ये हो जाएंगे जिस जानिब, उसी जानिब खुदा होगा। ये बहुत हो खूब। जाएंगे जिस जानिब, उसी जानिब खुदा होगा। शुक्रिया। बहुत अच्छा, खूब। एक और है, दो लाइनें हैं। कत्ल खुद हो गया, कातिल न बनी बात उसकी। कत्ल खुद हो गया, कातिल न बनी बात उसकी। करबला वालों ने यूं बदला है कातिल का मिजाज। हम्म। करबला वालों ने यूं बदला है कातिल का कातिल का मिजाज। मिजाज, वाह वाह वाह। फिक्र तलवार से काटी नहीं जाती साकिब। फिक्र तलवार से काटी नहीं जाती साकिब। वक्त की लहरों पे है सिब्त पैगंबर का मिजाज। वक्त हम्म। की लहरों पे है सिब्त पैगंबर का मिजाज। शुक्रिया। तो इसके अलावा देखें, अगर टाइम हो तो मेरे पास एक गजल है। बढ़िया। तो पेश कीजिए। हाँ जी, हाँ, शुक्रिया। एक अली माजिद साहब की है। इसके चार अशार हैं। जब फसले बहारी आई थी गुलशन में, उन्हीं अय्याम से हम। जब फसले बहारी आई थी गुलशन में, उन्हीं अय्याम से हम। यारों में लुटाते फिरते हैं कुछ फूल गजल के नाम से हम। हम्म। यारों में लुटाते फिरते हैं कुछ फूल गजल के नाम से हम। खोले हुए गजलों की दुकान, खोले हुए गजलों की दुकान, टूटे हुए दिल के नाम से हम। खोले हुए है गजलों की दुकान, टूटे हुए दिल के नाम से हम। छलकाएंगे कितने जाम अभी इस एक शिकस्ता जाम से हम। छलकाएंगे कितने जाम अभी इस एक शिकस्ता जाम से हम। वाह, बहुत खूब। बुझने का ख्याल आता ही नहीं, बुझने का ख्याल आता ही नहीं, रोशन जो हुए एक शाम से हम। बुझने का ख्याल आता ही नहीं, रोशन जो हुए एक शाम से हम। तकलीफ सुलगने ही तक थी, जलते हैं बड़े आराम से हम। आराम से हम, वाह वाह वाह। तकलीफ सुलगने ही तक थी, जलते हैं बड़े आराम से हम। आज अपने झरोकों आज अपने झरोके पर, आज अपने झरोके पर बैठे पत्थर हमें मारो हो प्यारे। आज अपने झरोके पर बैठे पत्थर हमें मारो हो प्यारे। कल फूल उछाला करते थे उस बाम से तुम, इस बाम से हम। कल फूल उछाला करते थे उस बाम से तुम, इस बाम से हम। जब फसल बहारी आई थी गुलशन में, उन्हीं अय्याम से हम। यारों में लुटाते फिरते हैं कुछ फूल गजल के नाम से हम। शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और सुनाइए।
आज कितने 9 लोग आए हैं। हाँ, महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम, आप अनम्यूट कीजिए। पहले तो आपने जो अपने पिछले हफ्ते की प्रोग्राम की एडिटिंग की थी ना, बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, शुक्रिया, थैंक यू, हाँ हाँ, थैंक आप तो यू। आपने तो उसको टाइटल और ये वो देके और सही तरह से उसको काफी मेहनत लगी होगी उसमें। बस हो ही गया सर। हाँ जी अस्सलाम वो वालेकुम महमूद साहब, वाकई बहुत वालेकुम अस्सलाम। एक तो इतने प्रॉम्प्टली, इतने जल्दी आप ये वीडियो बना के भेज देते हैं हम सबको। जी और जी, बड़ा काफी मेहनत होती होगी उसमें, लेकिन चले ये कि बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बस अस्सलाम वालेकुम। रिटायरमेंट में यही हो जाता है, कुछ हाँ, नई मशगूलियात। अस्सलाम वालेकुम। हबीब भाई, आप अगर अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए, वो जब आ रहे हैं तो महमूद साहब आज आप कुछ पेश करना चाहेंगे? अगर टाइम है कुछ ऐसे। हाँ बिल्कुल है अभी। तो ये कथा है। आ, किसी ने कहा है कि हज अदा करने गया था कौम का लीडर कोई। हज अदा करने गया था कौम का कौम लीडर का कोई, लीडर कोई। संगसारी के लिए शैतान की जानिब गया। वाह वाह। संगसारी के लिए शैतान की जानिब संतान की गया। जानिब गया। पहला कंकर मारते ही ये सदा उसने सुनी। वाह पहला वाह। कंकर मारते ही ये सदा उसने सुनी, तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर क्या हुआ। तुम तो अपने आदमी वाह 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 वाह। बहुत खूब। थे। तो एक और कथा है कि एक मोहब्बे शायर मशरक से ये मैंने कहा। एक मोहब्बे शायर मशरक से ये मैंने ये कहा, कुछ तो फरमाए हुजूर इकबाल के अहवाल में। कुछ तो फरमाए हुजूर हुजूर। इकबाल के अहवाल में। बोले अल्लामा से बस इतनी ही निस्बत है मुझे। बोले अल्लामा से बस इतनी ही निस्बत है मुझे, मैंने बनवा ली है कोठी गुलशन इकबाल में। गुलशन कराची इकबाल गुलशन में। हाँ। इकबाल, हाँ, कराची गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल में। और अभी वो शब बारात गुजरी है पिछले हफ्ते। तो बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें। बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहोगे जनाब यहाँ पर वो पाओगे। जो चाहोगे जनाब यहाँ पर वो यहाँ पर वो पाओगे। पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का खाने केक है। हैं। बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। लेके लेके जाएंगे। लेके जाओगे। और ये यहीं पे खाओगे। आखिरी कथा है कि अगरचे पूरा मुसलमान तो नहीं लेकिन, अगरचे पूरा मुसलमान तो नहीं लेकिन मैं अपने दीन से रिश्ता तो जोड़ सकता हूँ। मैं अपने दीन से रिश्ता तो जोड़ तो सकता जोड़ हूँ। सकता हूँ। नमाज रोजा और हज और ज़कात कुछ नहीं सही, कुछ ना सही। नमाज रोजा हज और ज़कात कुछ ना सही, शबे बारात पटाखा तो छोड़ सकता हूँ। शबे बारात पटाखा तो छोड़ सकता हूँ। पटाखा शुक्रिया, तो छोड़ सकता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। पटाखा छोड़ के मुसलमान हो गए। हाँ, एक इस पे मुझे याद आया, वो एक हमारे सेक्रामेंटो के दोस्त हैं, वो हमेशा ये सुनाते हैं कि वो ईद पे नमाज पे चले गए साहब, तो कहता है, उसका दोस्त कहता है कि अबे तुम क्यों यहाँ आए हो, तो कहता है अब इतना भी मैं काफिर नहीं हूँ। तो चलिए जी, कमर भाई, आप तैयार हैं? हाँ, जरा जरा मुझे 1 मिनट दीजिए। तो ये हम पहली बार ट्रैवलॉग कर रहे हैं पीएससीसी के प्रोग्राम में। आसिम बाजवा ने ये सजेस्ट किया था, तो हम एक दो और भी करने का प्रोग्राम है बाद में। एक बंदा है हमारा, मेरी वाइफ का जानने वाला फोटोग्राफर है, तो वो अर्जेंटीना और पेरू गया था, तो वहाँ की वो बताएगा।
हाँ, जबरदस्त वो माचू तो पिचू। तो कमर भाई जो है ना, हम एटलीस्ट 40 साल से तो मैं जानता हूँ उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को। तो हमारी दोस्ती काफ़ी पुरानी है और ये ट्रैवल बहुत करते रहे। पहले फाइनेंस में होते थे, वो भी टेक इंडस्ट्री में हुआ करते थे। तो उसके बाद जब रिटायर हो गए तो उन्होंने वैसे और भी नॉन प्रॉफिट में काफ़ी काम किया है उन्होंने, यहाँ की मस्जिदों में और जगह भी। तो फिर वो पीस कोर्स यूएसए जो है वो उसके साथ गए और फिर नाइजर और ज़ैम्बिया गए और काफ़ी टाइम गुजारा। 2-3 बार जा चुके हैं, वो आपको बताएंगे। तो मैंने उनको कहा कि भाई ज़रा पेश करें इसमें, तो उन्होंने इकरार किया है कि हाँ ज़रूर। तो उनसे गुजारिश है कि वो अपना प्रेजेंट करें। आप अपना मैंने स्क्रीन शेयर का लिख दिया है, तो कमर भाई आप कर सकते हैं अगर। I can share the screen. हाँ, आई थिंक यू कैन। Okay. Let me see. मेरे दिमाग में एक सवाल है, वो जी। जफर नूरी के बच्चे कैसे हैं? किसी को पता? मैं तो नहीं जानता। अच्छा, वो बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, आपको याद होगा। मुझे नहीं, सॉरी, मुझे नहीं पता। अच्छा, Asghar, I'm getting a message, the host disabled participant screen sharing. अच्छा, ठहरे फिर शुरू करते हैं किसी तरह से। अब देखिए, आप कर सकते हैं। Let's try it again. Can you see it? अभी तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन आपको शेयर करने दिया। मैंने किया तो है, लेकिन आप पता नहीं है आप। You can see my screen. नहीं, स्क्रीन तो नहीं नजर आ रहा आपका। आपने उस जो जो जिसको आप शेयर करना चाहते हो उस पर क्लिक किया आपने? जी मैंने ओपन किया हुआ है। It's a PowerPoint presentation. ताजुब है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, लेकिन आप शुरू कर सकते हैं। आप स्क्रीन शुरू की। Screen से okay. Now it is showing the screen. I can start. Okay. Assalamu alaikum. We started, working with the Peace Corps or USA, and we joined in sometimes in 2010. And it was between me and Awad. We both went to Niger. It's a East African country, and it's a landlocked country. And we were there from 2010 to 2011. And we had some problem with the security with the Al-Qaeda, and so we were forced to leave the country, and then we come back after 6 months. But we stayed there, we have completed the training, and we lived there with the host family, and we served about 3 months as a volunteer. So Zambia, the Niger is a landlocked country. It consists of about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10 districts. So we were, let me go back to this. Yeah. And consists of the 10 districts: Doso, Talaberi, Chalkuta, Zendia, Dufa, Dagades. So, and the Niamey is itself is a capital and a district. And we get to stay in Niamey. It's kind of a suburb of Niamey where we were stationed to get the training. कमर भाई आपका स्क्रीन नहीं नजर आ रहा। हाँ, मैं ये तो स्क्रीन आपको शेयर नहीं हो रहा है वो। अच्छा, मैंने तो वो शुरू किया हुआ है आपके लिए। मैंने कहा जो भी स्क्रीन शेयर करना चाहे वो कर सकता है। I have opened it. चलिए आप शुरू रखिए। देखते हैं मैं इसमें आ रहा है आपका। तो दिखा नहीं सकूंगा स्लाइड। मैंने पहले भी ऐसे किया है तो लोग को शेयर कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन में नीचे आ रहा है शेयर स्क्रीन और उस पे एक अप एरो है, शायद कमर भाई को उसको टच करना होगा, उसको क्लिक करें। या मैंने किया तो हाँ वो वही कर। हाँ अब आ गया। नहीं आ रहा है। ये जूम का है स्क्रीन। Okay, let me see. You can see my screen. हाँ ये सही है। अब आया वो। अब आ गया। अब आ गया। Okay. और वॉलंटियर कमर Okay. भाई। So first we went to Niger. We were there for 6 months, and then we came back after 6 months, and after maybe 2 years we went back to, we joined Zambia, the Peace Corps again, and we went to Zambia. And Zambia we stayed for 2 years, from 2012 to 2014. So I will go on Zambia before then we go to Niger, because Zambia we stay for 2 years. So there's more detail in Zambia. Okay. So, and Zambia is a landlocked country too. It's in the south part of the Africa. It's landlocked between Congo, Angola, Tanzania, and Botswana, and Zimbabwe. You can see this right here in the middle. कमर भाई आप स्लाइड उस पे जाएं। स्लाइड ये साइड पे और भी स्लाइड आई हैं तो छोटा नजर आ रहा है। स्टार्ट स्लाइड जो होता है ना उसको शुरू करें। ऊपर एक है लेफ्ट की तरफ स्टार्ट स्लाइड और स्लाइड शो। अगर नहीं है तो ठीक है, नजर तो आ रहा है लेकिन। Yeah, let me see if I can do it. चलिए आप शुरू रखिए कमर भाई। ठीक है। आ नहीं रहा स्लाइड शो का मेरे पास में। आता तो है लेकिन इसमें I don't know. This is slide glide. मेरा ख्याल है चलते रहिए फिर। हाँ, okay. Zambia. This is the map of the Zambia. उसके अंदर जो you have like 10 districts of provinces in the Zambia, and Lusaka is the capital and it's a province too in Lusaka, and
we were stationed in Luapula. This is way up in the north. Okay, and Zambia got the independence in October 1960 from UK. It has the area of about 290,000 square miles. Population is over 17 million people. And the religion background is mostly the Christian, but 75% are Protestant, 20% Catholics, other Christians 2.7%, and very small population of Muslims, about 1%. Demographic. Zambia consists of 72 ethnic groups. There's a lot of, different small communities there, big groups in there. And the Bamba is the biggest group with 21%, Tonga 30%, Lodi 5.7%, and Senga 5.3%, about 1.5% Muslim, and about 54% all other tribes. Climate in Zambia is tropical, modified by elevation. There are two months. Main season from November to April corresponds to the summer, and dry season from May to October. That is corresponding to the winter. It's opposite of our weather over here. When we have summer, it's winter over there in the southern hemisphere. The government, after the death of Michael Sada on October 28, 2014, Edgar Lungu won the election to become the sixth president on January 24, 25, and they have recently re-elected him again for 5 more years. The transportation is mainly trucks, buses, vans, and cars. They use some kind of like minivans for bush taxis, and they have ox cars, donkey cars, bikes, and a lot of people just don't have anything, so they do walking. There's one railway that runs from Capri, that's in the central province, and it runs from the Capri to Tanzania. Airport, it has just one international airport, that's in Lusaka, but there are 3 more small airports in Angola, Mansa, and Chipaway. कमर भाई ये किससे उसे इंडिपेंडेंस मिली थी? कौन सा कंट्री रूल करता था पहले? UK was the colony of the UK. Okay. Was in 1964. हाँ, ठीक है. Okay, roads, there's just one road that runs north to south, and that's the only paved road. The rest of the roads are all dirt roads. Agriculture, the main agriculture is maize and cassava, and that's run based on the rain. Because rain is usually in the winter time, our winter time, and there is from October to April or May time frame, that's their summer. And they have like other crops, they have rice, garlic, pepper, pumpkin, tomatoes, and grown in small gardens and farms. Health. According to 2014 average life expectancy in Zambia is 51.83 years. Zambia faces an estimated 30.5% HIV infection rate among adults. That's pretty high, High fertility rate of 6.26 child per woman. They have a lot of little kids. Education, primary education is compulsory from grade 1 to 7, but enrollment is only 80%. And of them, 87% are boys. Living condition, very primitive, water, running water,
water available only in the big cities. Most of the time, most of the towns and the villages, they get the water from the rivers, ponds, and the wells. Electricity available only in the big cities with the periodic blackout. In most of the country, there's no electricity. Sanitation, plumbing and sanitation available only in the big cities. Most of the people do not have any bathrooms, leave alone shower or toilets. And toilets are usually just a hole in the ground. People, they are the best people in the world, poor, but always take care of the others. They are very generous and hospitable. People are poor but happy and do not care about the worldly things. They are not educated but simple and religious. Polygamy is generous in all generations. Then I'm going to show you the pictures from the Zambia. Okay, these are the pictures starting when we started the training over there. Go back. I'm trying to do the slideshow and this is not working. Seems to be working now. It's working, but the slideshow is not. You can click slideshow there. Yeah, these are the pictures from when we started from there, from the airport. Now we are in the training. And this is the hut that Taj was in the training. This is one of the training classes. This is the hut there where I was staying. This is my bathroom, the shower where I take a bath. And this is the toilet where I was using. This is the training. This is Taj. She was doing some agriculture training. This is the shop of a Muslim Indian, old Indian Gujarati, brother. This is after the training, we were graduated after the training. So this is the graduation party. These are some of the people after the training. This is the whole group of our class in the training. This is where we are getting ready, leave the training and go to the towns. This is my counterpart, Martin. He was my counterpart. He used to translate the language. And this is in the training class that I was teaching, and the local people, the farmers.
This is local people. There are after training. This is where after training we were our village hut. This was the well where we used to get the water before we converted that. This is after we built it, with the covering and all that. This is the toilet that we were built it after, because before it was a hole in the ground. This we remodeled the kitchen. We built a kitchen, in that hut, where we can do the cooking. Otherwise, we used to cook outside. This is a picture with the chief of the town. This is the clinic where Taj used to volunteer. This is people with the local people. This is local church people there we used to go. And this is a project that Taj started building a clinic for the village. This is construction going on. And this is after the completion. She is with the chief and her counterparts. This is completed the clinic. And after the completion, we had a grand opening and we had some sweets and stuff for the kids, chocolate and biscuits and cookies. So we are distributing to the kids. This is the start of the, presentation. This is where we used to, she used to take care of the kids, outside, under the tree. This is a training class for the girls, she was training some girls, how to do some handicraft works and some stuff about the HIV and the malaria. This is the malaria class, she's conducting a class for the malaria with some of the local NGOs. This is one of the same thing, with the NGOs. She was used to work with them on the health issues. This is one of the health fair that she was showing. This is some local kids, she was training. And I was part of the agriculture and fish farming volunteer. So I used to train in the agriculture, how to do the agriculture and farming. So, and this is the class, my class, that I used to train them how to do fish farming and agriculture farming. So this is Martin, he was the counterpart. He used to translate from English to the Bamba. This is a visit by the Swedish Minister of Agriculture. He visited one of our farm, fish pond. This is the pond, fish pond where we used to farm in that tilapia. Tilapia is the main, fish farming from in Zambia. And this is we are doing the harvesting of the tilapia. They don't have the stuff for there, so they were using a net that was supposed to be used for the malaria net, and they are using it for harvesting the fish from the pond. This is all during the training, but when we were in Zambia, we went on some vacation. So I'm going to show you some slides from our trip to Victoria Falls and the Chobe. Chobe is a national park, for safaris. So.
Are there a lot of monkeys there? Or? No, this is where we are in Victoria Falls. You know, there are a lot of monkeys in that area. So they jump on the cars, everything there. Wow. Very interesting. Yeah, that's a nice picture. This is the Victoria Falls. This is one of the falls in the It's a very world, famous. you know. Oh, wow. It's very big and Very huge, big. you know. Yeah, when you go during the winter season, when there is a lot of water there, Oh, look at you that. cannot even Deer. see there. This is in the Chobe, you know, Oh, Wow. Elephant. safari, you know. This is a bull, you know. He has big bulls over there. Mm. Another picture of the Chobe, the Victoria Falls. This is the Zambezi River, you know, going through, and this, on one side is Zambia, the other side is Zimbabwe. So on Chobe, you go on the road and on the boat too, on the Chobe River. Aha. Snake. There's a lot of hippos over there in that river. Mm. So weather is like India, Pakistan, or different? This was during the, like in March, April time frame, so it was kind of end of the winter. There's a lot of wildlife. There are a lot of wildlife over there. There's a lot of lions, I mean, not the lions, the elephants. Mm. But the tourism industry must be big there, isn't it? Very big. So why the country seems so poor? Because most of the industries, they are owned by, not by locals, they are owned by either the white people, they were there before, Right. or, you know, there are a lot of Indians there. The Indians own a lot of the businesses. They've been there a long time, from British times. Oh, this is what? Cougar? Leopard? Leopard. Leopard. so this was inside a zoo or safari park? This is not in the zoo, this is safari. Safari. Park. Open. Yeah, it's open, you know. Oh, So I think we were on in the 4-wheel, you know, driving in there. Mm-hmm. oh. I had, you know, a lot of pictures. I have to just, you know, select very. We have limited time. Wow. Okay, let me show Great. you another one. So you have to have somebody with the gun at that time? In this? The gun? Yeah, Security Why? for you. for security? No. Security. No. No? You don't need security for that. But safari, no, we were there, you know. Okay, and then in this was a small safari. Then we went to Tanzania. That's where the big safaris are, most of safaris. Tanzania is very well known for safaris. Okay, we went from the Zambia to Tanzania on the rail. You know, we took a rail from Capri. It's the only road that goes, the rail road to Jatiawase.
Capri to Addis Ababa, Dar es Salaam, sorry, Dar es Salaam. So we went to Dar, and then from Dar we took a ferry to Zanzibar. So this is beach on Zanzibar. Zanzibar is a very beautiful island, you know, Mm. and it's an autonomous kind of an area of, you know, Tanzania. And the beaches are very pretty. So do they have cows and goats and Yeah, dogs yes, and yes. Yeah, they do. But they usually don't eat cows because they can't afford it. They usually raise it to sell it. This is Zanzibar is very famous for the spices. They have a lot of their spice gardens there. These are all spices over there that they have cloves, cinnamon, cardamom, and they all come from Zanzibar. do they speak Arabic? You know that Stone Town is very famous in Zanzibar. Stone Town. There's markets and stuff over there. And this is the sunset on the other side of the Zanzibar. This is the early morning picture from the on the this is the sunrise. How did you get your food? Halal is available there? Yeah. In Tanzania is halal food. Zambia very hard to get halal food. We used to have just veggies, you know. Mm. This is, you know, we went on a trip from Zanzibar on a boat. It's called the sea safari or blue safari. You know, you can see the water is so clear, all the fish are clear. Yeah, some blue, you know. This is where we were in there. This is one of the hut, you know, we were staying on that in Zanzibar. And this is we fly from Zanzibar to for the safari to the Mount Kilimanjaro. This is Mount Kilimanjaro from the airport for the safari. And we have to take from Mount Kilimanjaro to Airport Arusha to take the safari. This is the first stop, and this is the first White Park. You know, that was it. I think screen sharing has gone. We can't see the. It's gone? We can't see the. You cannot see? Yeah. Hold on a second. Let me go back. Mount Kilimanjaro and other things. Or it is me who cannot see it. No, I cannot see it either. Yeah. Now, Okay, now we can see. Can you see it? Yes. Small Is it pictures. okay now? Small pictures. But if you click slideshow something. Yeah, I want slideshow. I It's see not many moving? pictures. Can you see it? I see some small pictures. Why? I don't. Why are you getting a small picture? Let me go back. The
full screen on my side. I don't know. Javed, Kamar bhai, whatever you see, that's what we should see. Yeah, But I have full screen on my computer. we are seeing just your desktop with all the accesses and then pictures, small pictures. Oh, I'm sorry. I don't know what's happening here. You multiple screen opened? Yeah, one screen is frozen. I think it's not moving. The first screen with the आपके डेस्कटॉप के कितने स्क्रीन खुले हुए हैं, कितने खुले हुए हैं डेस्कटॉप पे? I खुले हुए थे मेरे actually. अब आप एक एक करके दिखाइए जो है, तो सब पे क्लिक करते जाइए। ये हाँ चलो मैं ऐसे करता हूँ, स्लाइड शो नहीं करता हूँ मैं आपको। Okay, we were in somewhere over here, Mount Kilimanjaro. हाँ, इस पे क्लिक कीजिए। आ रहा है नजर आपको? नहीं, ये क्लिक वो वैसे ही छोटा, इट्स नॉट ओपनिंग। ये मेरा ख्याल इंटरनेट की स्पीड की वजह से तो नहीं है प्रॉब्लम? नहीं, आपके कितने स्क्रीन्स ओपन है आपके डेस्कटॉप पे? Don't have any screen open except for. कितने विंडोज ओपन है? I don't have any open now. I closed everything. बट वी सी वन। आप इसको क्लोज करके फिर से शुरू करें। Let me close this thing. इसको भी मैंने बंद कर दिया है। अब तो बस ये मेरा जूम का है। शेयर कंटेंट। आप शेयर स्क्रीन पे क्लिक करें, जो ग्रीन में है, ग्रीन कलर का नीचे। शेयर स्क्रीन या शेयर कंटेंट। अमर भाई, आपकी उस पे नीचे शेयर स्क्रीन ग्रीन पे नजर आ रहा है? ये तो मेरा जूम आ गई, मीटिंग आ गई मेरी। अच्छा, पहले आप तो जूम के उसके स्क्रीन पे जाइए ना। जूम का स्क्रीन आ गया। I got you. I have your little one here. नीचे सबसे नीचे की रिबन पे आपको स्क्रीन शेयर स्क्रीन आ रहा है नजर? Actually, somehow I got logged out here, join meeting. आपका नाम तो आ रहा है, आ रहा था। चलो, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं।
मेरा ख्याल वो फिर से कोशिश कर रहे हैं एंटर। हाँ हाँ मैंने बहुत सी बार लोगों को स्क्रीन शेयर करने के लिए किया है और हमेशा चलता है। लोगों ने तो वीडियो भी दिखाई है स्क्रीन शेयर से। अच्छा। कमर फिर से आ रहे हैं। राइट। कमर भाई आप नजर आ रहे हैं, आपका म्यूटेड है आप। आप सही है। जी आप आ गए फिर से। राइट। अब देखिए वो शेयर कंटेंट या शेयर स्क्रीन में जाइए। आपको नीचे रिबन नजर आ रही है कमर भाई? बैन नजर आ रहा हूँ कि नहीं? हाँ, जिसमें एक सिक्योरिटी है, पार्टिसिपेंट्स हैं, पोल्स है, चैट एंड देन शेयर स्क्रीन। हाँ तो इसको शेयर स्क्रीन कीजिए। हाँ कर दिया मैंने। तो कौन सी आपकी जो उसमें नजर आएगा, आपके जितनी भी विंडोज खुली हैं वो नजर आनी चाहिए अगर खुली आ हो। रही है अब तो मेरी नजर आई can see them. Yeah. So I go back to my where is my no. आप लॉन्च मीटिंग पे आ गए, आपको जूम का मेन स्क्रीन आ गया। Yeah, but I'm not sharing somehow. यू आर शेयरिंग। Am I sharing? Can you see? Now you are sharing. You are sharing your desktop. Okay. Niger. Zambia. जी वो पिक्चर सब नजर आ रही है। नहीं नजर आ पिक्चर? तो सब पिक्चर पर आप क्लिक करते जाएं एक एक तो हमें नजर आएंगी बड़ी होकर। इस वक्त छोटी नजर आ रही हैं। हाँ तो माउंट किलिमंजारो से शुरू करें ना फिर जाके। ये माउंट किलिमंजारो पे क्लिक कीजिए। हाँ ये देखिए अब आया। जी अब आया। Okay, this ये जो था माउंट किलिमंजारो के उतरे थे एयरपोर्ट, यहाँ पे एयरपोर्ट है, जैसे एयरपोर्ट, international airport, you can fly in and out. Instead of going to Dar es Salaam, you can go straight to the Mount Kilimanjaro airport. अच्छा वहाँ से then we have to go to the Arusha. Arusha is a town from where जहाँ से जो है ना सफारी जाती है सारी. It's a small town. They have a lot of hotels and stuff over there. And all the safaris वहीं से start होती है. So this is where we start. First national park. Yeah. Caribou Tina. Oh wow, good bird. Yeah. So this is and they have a lot of monkeys. So you have to be careful. वहाँ पे वो कार में से ले आते, कार के अंदर आ जाते हैं वो. Yeah. So he took out some of the. I think we have some cookies or some stuff in the car. सीट के ऊपर वो ले गए थे. Giraffe. Zebra. There's a lot of zebra and wild beasts. They call it wallabies over there. Migration होता है समर के अंदर, so lot of zebras and wallabies, you know, they are on migration. These are the wallabies. You know, they call wild beasts. That was the shortest one. Short. They say wallaby. शुतुरमुर्ग. Yeah. Yeah, आपके zebras, there are a lot of zebras. This is the hut, you know. They have very nice huts over there.
cabins, you know, they have everything in there. Nice bed, they have a bathroom, shower, everything. Wow. Safari Lodge. A lot of safaris, you know, lodges, they are owned by Indians. And they, you know, they are Patels, you know, they own a lot of lodges. Elephants. Lot of elephants, वहाँ पे elephants बहुत हैं. This is Ngorongoro. This is a pretty big, you know, national park too. जो है ना, these लोग, they are all Maasai. Maasai people, they are very different, you know, than local people. They are very primitive. और ये जो है ना, अपने सिर्फ they don't believe in machinery or stuff. तो ये usually वहाँ पे है ना, cattle के पास बहुत होते हैं, cattle वगैरह जो है ना, उनके ऊपर गुजारा करते हैं. आप माउंटेन पे गए थे किलिमंजारो के टॉप पे? नहीं, हम लोग पता टाइम नहीं था कि किलिमंजारो पे जा सके ऊपर. हाँ. ये उनका, this is their house, you know, the hut. The Maasai people, they live inside. There's no windows, nothing. It's dark inside. You cannot see anything. It's so dark. लेकिन हम लोग उनके घर में गए थे, घर के अंदर, because actually you cannot, because it was in that area, their territory, you have to visit them. So you have to pay to go through their territory. So yeah, inside it was so dark, you didn't see. I was just taking some pictures on. So ये भी कोई माँ बैठी थी अंदर. Wow. लेकिन मुझे डर नहीं आ रही थी वो. बिल्कुल ही यानी primitive, old. हाँ, very primitive लोग. ये उनका This is the biggest, you know, safari park, Serengeti. यहाँ पे Serengeti में they have a lot of lions and the big cat. Not hippos too there. This is a lion. A lot of lions and maybe the cubs. ये जो था ना, हमने we just saw that they kill, you know, they killed the zebra. Just before we got there, they just killed the zebra. This whole, you know, family of the lions, you know. Now they are dragging it into the bushes where they eat it. कमर भाई, आपके पास अब 15-20 मिनट और हैं. जी ठीक है, मैं जरा क्विक कर देता हूँ इसमें. ये सबसे पहले I'll go to Niger, you know, after this. आपका अंदाजा तो हो गया ना ये सफारी का? जी. Unauthorized operations and mind control, a support post, a means for the
Somebody has a radio on. Okay, let me close this and go to the Niger. अब कमर भाई देखिए, आप ऊपर की रिबन है ना, उसमें जहाँ इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है और फिर स्लाइड्स है, उस पर क्लिक कीजिए। हाँ, इसको क्लिक कीजिए, डबल क्लिक। और फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं, आप फिर से जाइए, यहाँ डबल स्लाइड शो पे जाएं, फिर से क्लिक करें एंड फ्रॉम द बिगिनिंग लेफ्ट साइड पे जो है, हाँ, now you can just say enter, you will go to next slide. Yeah, this is the map of the Africa, and the Niger is up on the top in the northeast, northwest actually, the west over there. This is the provinces of the Niger. They got independence sometimes in 1960. They have 490,000 square miles of the area, population 23.3 million. And the religion, 90% are the Muslims, 5% Christian, and 5 other religions. Their demographics is Hausa is the biggest tribe over there, 56%, Zarma 22%. Fulani is the people that travel from back and forth during the season. And Tuareg and other 5.5. The climate is very hot and dry. But in south of the Niger, by the Niger River, it's a tropical. The election, they recently elected Mohamed Asufu as the president. The transportation is very primitive, just trucks, buses, vans, cars, push taxis, ox and donkey cars are walking. There's no railway line in Niger. Airport maybe bus 80, there's just one airport, Niamey. Agriculture during the rainy season, they grow millet and shogun. Other than that, they grow, by the river, rice, garlic, pepper, potatoes, lettuce, and some of that small stuff. Their main export is uranium, yellow cake. That was the one that I think the Bush era, they were saying that Nigeria was exporting uranium to Iran or somewhere, or Iraq, actually, was Iraq. Wow. Very high over there. 1 out of the 4 dead between age and 4 infant, Fertility is 6.9 child per woman. Nearly 15% population to 15-year-old. Education, very primitive. Primary education is very compulsory up to 6th grade, but enrollment is just 25%. And of them, 60% are the boys. Living conditions very primitive, just like Zambia. There's no running water, no electricity, no sanitation. People are very nice people, just like Zambia, very poor, but very happy with what they have. And polygamy is very common in the old generation. They like 2 or 3 wives. We started after we came back, we started a charity security help the people Zambia and Pakistan, USA. We are doing security help, clean water and food security. In 2020, we drilled 3 tube wells and distributed about 49,000 pounds of meat. For details, please check securehelp.org for details. Okay.
This is during the airport, we're going from New York to the Miami. So we are waiting at the airport. This is Miami. They are receiving us. This is our group in Miami doing the training. This is one of the chiefs in Miami. This is our group, the chief. This is one of the class, for our language training class. This is Taj doing some training, during the. This is where you should see this about bed in the. This is the hut that we stayed during the training. This is the host family, the host father actually we call it. This is ambassador, U.S. ambassador that visited us during the training. This is people, we went out for breakfast, I think, to Miami City. This is the Ramadan. This is with the chief, doing the prayer, the Eid prayer. This is during the Eid al-Adha, they are doing the Qurbani. After the Qurbani, because they don't have the fridges, they usually cure with the heat, they kind of, they cure the heat with that. The training, this is during the Thanksgiving, we have a party, so everybody dressed up with the local costumes, This is the market in Niger, the main market where they buy this stuff. This is the same market. This is ox cart that we were traveling on. One of the villages, ox. We're getting the water from the well somewhere. This is the Thanksgiving party over there. During the graduation, this is the country director of the Peace Corps. This is the oath ceremony. This is the whole group after the oath ceremony. This is after the training. This is our hut where we were living. There was just hut. This is our kitchen, and this is the hut inside. This is the kitchen. That's all we have the kitchen, In Niger, they gave us the gas so we could cook over here. In Zambia, we had no gas. We were using the coal. This is one of the mosques, the biggest mosque in Niger. It was built by somebody from Arab country. This is headquarters. That's about it for doing the training. How much time do I have? Another 5-10 minutes. Can I show another trip that we make in 2019? Quickly. Yes. Okay. We went again in 2019, just for on our own as a humanitarian. So we visited the schools. The last meal we were distributing to the kids. Somebody donated a toy, so we donated to the kids. This is the village where we bought some goats for the distribution. This is a well that we built over there. This is transportation, how they transport, things over there. There's a truck, all the stuff, the double decker. This is the road we give it to some town, This is the elders of the town. We took some Indian, clothes that we give it to the people over there. This is the same mosque, the big mosque in Miami. The daily transportation. This is distribution of the food, we are doing the food distribution and stuff.
Then we close with the clothes, that we give it to the people who are there from. People who give it to us, to the distribute. This is the people, the Niger, the Peace Corps staff, they are the ones that are helping us to help the people there. This is a big main market in Miami. This is the chief here, they gave us some land over there to build the tube well. This is that we did that recently in 2019 and finished it in 2020, the tube well. The water is very deep over there. You have to drill it, drill like 60 to 80 meters down to get the water, clean water. And we have to install the solar system and to get the water, because we have to install the pump. Okay, that's all I have it. If you have any questions, and please, I'm here. Let me see. Yeah, there was a question earlier. Who did the photography? Who did the photography? Photography? Yeah. You and Taj Ben, right? Yeah, Taj and we were just on it too. Okay, there was no other photographer. No, just us. Yeah, so that was the only chat question. I was taking the picture. Yeah. Anybody else has any questions? Yeah, I was interested in knowing how did you manage your meals, food? You were cooking yourself, or there were people cook for you? No. We were cooking ourselves. There was no cook because there's nothing there. Because we were living on basic. Because we were volunteers, so we were just getting enough money to buy the food and transportation and stuff. And we were not supposed to use our, U.S. money, but just what we got there. So because we have to live with the locals, just like the local living over there. Okay. So another question here. Can you compare Nigeria to Niger? Nigeria is more advanced than the Niger because Nigeria has oil and more resources. And Niger, they have landlocked and they have very limited resources. Very poor compared to Nigeria. Okay, let me see. There is one more maybe. Yeah, I have one question. Yeah. The common people had names like Muhammad, Ahmad, Aslam, Akbar, Razak, Rahim, or they had some different name. कमर भाई यू हैव फ्रोजन या जवाब वो क्वेश्चन ये था तसद्दुक भाई की तरफ से जी कि वहाँ मुस्लिम कंट्रीज जो होते हैं तो उसमें हमारे जैसे ही नाम होते हैं या और कोई डिफरेंट होगा जो मुस्लिम नहीं है तो उनके नाम कैसे होते हैं नहीं नाम तो मुसलमान जैसे हमारे जैसे होते हैं वो उनके लास्ट नेम डिफरेंट होते हैं बहुत लंबे नाम होते हैं उनके और नॉन मुस्लिम्स के जैसे क्रिश्चियन जैसे ही नाम जैसे इंग्लिश क्रिश्चियन से जम्बिया में ज्यादा क्रिश्चियन से तो उनके क्रिश्चियन नेम होते थे लाइक मार्टिन रॉजर जॉर्ज टॉम जस्ट लाइक ओवर हियर उनके भी लास्ट नेम जो थे ना लंबे होते थे उनके ट्राइब लोकल नेम होते थे वो लास्ट नेम लेकिन नाइजर के अंदर तो देयर वाज लाइक मुस्लिम नेम्स yeah any other questions from anybody तो कितने मुल्कों में गए थे आप टोटल हम लोग वॉलंटियर तो सिर्फ 2 कंट्रीज में थे नाइजर में थे 6 महीने रहे थे और जम्बिया में 2 साल लेकिन हम लोग वहाँ से फिर ट्रिप पे वेकेशन होती थी तो वी यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम देयर तो नाइजर से तो हम जब वापस आ रहे थे तो वी स्टॉप इन मोरक्को वहाँ पे रुके थे और जम्बिया से वी यूज्ड टू गो ट्रैवल अ लॉट तो वहाँ से तो हम
और जवाना भी गए थे और कहाँ गए थे, जिम्बाब्वे गए थे, मलावी, तंजानिया, South Africa. We were there just through the airport, we didn't have the chance. एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ये नाइजर के लिए मेरा ख्याल है, केवल पीपल स्पीक फ्रेंच? Nigeria, yeah, they speak French, that's their official language is French, everything is in French over there. But there's people, like the Peace Corps people, they knew English. So वो उनके मेरा जो counterpart था, तो और Peace Corps के staff, they all speak English. अच्छा, गुड. एक और क्वेश्चन मेरा ख्याल है आपने जो कहा था, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, ये काजी साहब आपने पूछा क्लीन वाटर. व्हाट्स योर क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज कि वाटर जो है वो वहाँ पे आप वेल से निकाल के उनको क्या उसको बॉयल करना पड़ता था आपको, या यू वुड ड्रिंक? जी हाँ. जो वाटर जब हम निकालते थे वेल से, तो वी हैव टू बॉयल करना होता था. वी हैव टू बॉयल इट and filter it, and then chlorine dropped out into it, and then we can drink it. Good. So what's very contaminated water था वहाँ पे. Both Zambia में भी यही हाल था और नाइजर में भी यही हाल था. और ये कुर्बानी का जो कुर्बानी के जो बकरे होते थे उनके, वो आप बोल रहे थे कि फ्रिज वगैरह का नहीं है बिल्कुल वहाँ पे, तो ये ऊपर ये धूप में कितने दिन तक रख के वो खा सकते हैं? वो धूप नहीं, आग जलाते थे, आग जला के फिर वो उनको क्योर करते थे वो. अच्छा. आग जला के ना वो हीट से वो काइंड ऑफ क्योर करते थे, तो वो प्रिजर्वेशन हो जाता था उसका फिर. जी उसमें मैं खास साल्ट वगैरह लगा के दे यूज्ड टू क्योर इट. हाँ, साल्ट लगाते हैं. हाँ, सॉल्ट के साथ. ये तो पाकिस्तान में भी लोग करते हैं ना, कुर्बानी की कुछ चीजों को पतली पतली वो करके लगा के धूप में रख देते हैं 3-4 दिन. जी, लेकिन ये मीट जो था ना, हम लोग जो वॉलंटियर थे अमेरिकन, तो भी हम लोग नहीं खाते थे. वो हमसे कहा हुआ था कि डोंट ईट एनी मीट, तो हम लोग तो नहीं खाते, सिर्फ आमतौर पर वेजीज पर ही गुजारा करते थे वहाँ पे. एक और क्वेश्चन, मीट क्यों नहीं खाते थे आप लोग, क्यों नहीं खाते थे? Because it's maybe contaminated or spoiled. एक और क्वेश्चन है, आर देयर इन बिग सिटीज, आई एम अज्यूमिंग बिग सिटीज, गुड हॉस्पिटल्स? Yeah. Okay. Big cities have nice hotels and the hospitals, everything is there. The big cities, Niger, Niamey is not that good, but Lusaka and Zambia, they are very advanced. They have shopping malls, everything there. I see. तो ये 95% मुस्लिम पॉपुलेशन कौन से मुल्क की थी बताइए? नाइजर. जाम्बिया में तो just 1% मुस्लिम. अच्छा, आपने कोई हेल्थ सिचुएशन फेस की खुदा न खास्ता वहाँ पे, और उसमें क्या करना पड़ा? नाइजर में लोगों को काफी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वाटर की वजह से. जाम्बिया में भी होती थी, लेकिन मुझे अल्लाह से नहीं हुई थी, मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई थी. मतलब वहाँ पे स्टमक की प्रॉब्लम ज्यादा होती है. पीपल गेट सिक बिकॉज ऑफ द वाटर भी. और फिर लाइक fruit, veggies, we have to wash it with the chlorine and water, then cook it. Like sometimes people salad खा लेते थे, so salad भी used to be contaminated. We are not supposed to eat salad वहाँ पे, so चक्कर हो जाता था उसमें भी. अच्छा, फ्रूट कुछ मिलता है वहाँ पे आपको, ऑरेंजेस इस टाइप के? फ्रूट वगैरह मिलता है वहाँ पे, फ्रूट वगैरह, लेकिन you have to be careful, उसको भी वॉश करना पड़ता था. और ज्यादातर फ्रूट जो था ना, we are supposed to peel it, then eat it. और जैसे बनाना वगैरह खा लेते थे, एवोकाडो वगैरह मिलते थे, एवोकाडो, पाइनएप्पल. नाइजर में ज्यादा फ्रूट नहीं मिलता था, लेकिन जाम्बिया में बहुत फ्रूट मिलता था because there was more tropical. ओके, दो और कमेंट्स हैं. एक लिखते हैं हमारा, गुड प्रेजेंटेशन, थैंक यू.
और एक और अल्लाह साहब लिखते हैं, दिस वाज अ गुड प्रेजेंटेशन एंड आई एम थैंकफुल टू कमर भाई. सो कमर भाई, थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. आपने बड़े फोटोज इतने अच्छे दिखाए, इतनी अच्छी वो उनकी लैंडस्केप और उसकी पॉलिटिकल रिलीजियस इंफॉर्मेशन दी. दिस इज वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Really, thank you thank very you. much. It's good, बहुत you know, I अच्छी- can share my stuff, you know, with everybody. हाँ, ये Thank you. रिकॉर्ड Thank you, हुआ, sir. ये रिकॉर्ड हो रहा है. मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, PSCC के न्यूज़लेटर में आ जाएगी. जी. Great. हाँ, तो मैं उसको सॉरी, मुझे डिस्क्रिप्ट वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो इसकी वजह, आई एम सॉरी हाँ, अबाउट दैट. नो प्रॉब्लम. वो तो हाँ, वो मैं एडिट नहीं करूंगा तो सब चीजें आ जाएंगी. आप वापस देख लीजिएगा. जी. ओके, चलिए जी. थैंक यू. खुदा हाफिज सबको. Thank you so much. Very good presentation. Thank you. खुदा हाफिज.